Good morning, class. Good morning, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Open your cameras, beta. Nobody will sit in the class without opening the cameras, please. Switch your Good camera. morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Keep joining, and keep opening your cameras also. Good morning, ma'am. Good morning, beta. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, beta. Good morning. So, what we were doing yesterday? What we did yesterday, beta? Ma'am, civics. No. In the combined section. I'm geography. Geography. So we'll continue with the same, right? Good morning, ma'am. Good morning. Beta, please open your cameras, please. No one to enter Good morning, ma'am. without opening the cameras. Yes. And those who will not open their cameras, I will mark them absent. This is for sure. And attendance is marked in the last 5 minutes of the class. If you are there in the class, you take entry, but you leave the meeting, you will be marked absent. This is very clear. I hope clear to everyone, each one of you, right? Right, class? Yes, ma'am. Yes, Ishan. Yes, ma'am. I was not able to see. Okay. Where is Rishabh roaming? Ma'am, I'm here also. Huh? Ma'am, am I audible? Yes, you are audible, beta. With 2 classes, it becomes so difficult. For 5 minutes, I have to keep clicking the screen. Okay. Rashi is coming. Good morning, ma'am. Good morning, dear beta. Open your camera, bache. Ma'am, what is the combined class? We have to do civics. No, we'll do geography, beta. We'll do geography. Right? Ma'am, in next class we will do civics. Do we have next class? Yes, ma'am. Who said? Ma'am, वो busy है, ma'am. हाँ? मैम वो टाइम टेबल मैम डैश लगा हुआ है. हाँ, डैश लगा हुआ है. तो अब कल तो हमको सर ने बेटा कहा था टू टेक द क्लास, नो? दैट इज व्हाई आई टुक द क्लास. Okay, I am sharing the screen. I think the screen is visible to each one of you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Fine. ma'am. Fine. This page is done. I hope you people have done the flowchart that I gave you. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will ask you to show your notebooks on the screen, not today, but some other day, right? Yeah. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Fine. Okay. Anything up till here not clear or understood? All clear and understood, right?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. In yesterday's class, we were doing the developed up till reserve, sorry, potential and developed resources we have done, right? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Up till here, anything not clear or understood to any one of you? Abhinath, Adarsh Kashyap, Akshat Sharma, Aman, please open your cameras, beta. Art. वही डाल दो नहीं चलिए so we'll start from I think stock also we did, right? Yes, ma'am. We have done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. Done with the stock. हाँ. So I think Ma'am? Yes beta. Can you please explain me the national resources? Ma'am, one line saying oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as terrestrial water. Territorial water and resources therein being belong to the nation. वो ये कह रहा है कि 200 nautical miles का जो एरिया होता है of the ocean bed, जैसे हम लैंड बाउंड्रीज को तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ना, हमें इंटरनेशनल लैंड बाउंड्रीज हमारे बने हुए हैं, तो वॉट एवर फॉल्स इन दैट स्पेसिफाइड और स्पेसिफिक बाउंड्री that belongs to the country. Now when it comes to the water bodies, ocean, so in ocean 200 nautical miles area, the country can claim rights of it if any kind of mineral is found in that particular area, or whatever water based resources are found there, country has a claim on that. ठीक है? Nautical is the ma'am is a measurement of sea. यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है? Okay. Right? Okay. Now coming to the reserves. Now what is a reserve? Yuvraj, if you could read this for me. Akshar, your camera is not Yes, on, ma'am. beta. Akshar. Yes, ma'am. Opening in a second. Yes, Yuvraj. Reserves are the subset of the stock which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. River water can be used for generating hydroelectricity power, but presently it is being utilized only to a limited extent. Thus, the water in the dams, forests, etc. is a reserve which can be used in the future. क्या reserves क्या होते हैं? आप most of you I think you ride scooties, or you must have seen that sometimes when the needle that shows what is the fuel capacity, how much of the fuel is left in the bike or in the scooties or activas, you must have seen that there are two lines which shows that below that if the needle goes, that means the reserve petrol you have started using, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Rajkumari. ओके तो वो ये जो निडल आपको बताती है नीचे की तरफ जो होती है, एकदम नीचे चली जाती है, तो इट टेल्स यू दैट अब जो है रिजर्व जो में जो पेट्रोल था वो अब हम यूज करना शुरू कर दे रहे हैं. जनरली क्या होता है, रिजर्व वाला जो पेट्रोल है हम उसको रखते हैं फॉर दी इमरजेंसी टाइम्स, ठीक है? हम रिजर्व वाले पेट्रोल को यूज नहीं करते हैं जनरली, ठीक है? अब यहाँ पे भी वो कह रहा है कि जो रिजर्व्स होते हैं दे आर द सबसेट ऑफ स्टॉक्स. स्टॉक्स हमें पता है क्या होते हैं, कि हमें मालूम है रिसोर्सेज है हमारे पास, पर क्योंकि हमें पता नहीं है कि उनको किस तरीके से यूज किया जाएगा, उनको काव्या ओपन योर कैमरा, किस तरीके से यूज किया जाएगा, तो इस वजह से जो है उसको हम जो है स्टॉक मानते हैं, ठीक है? और रिजर्व भी एग्जैक्टली इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है. बस
डिफरेंस क्या है दोनों में कि हमें पता है कि ये हमारे फ्यूचर के लिए काम आ जाएगा, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्व्स जो होते हैं उनके बारे में हमें पता होता है कि वी कैन यूज देम इन फ्यूचर, राइट? राइट क्लास? तो मैम अगर हाँ बोलो Yes, बेटा। ma'am. Yes, ma'am. बोलो बोलो सानिध्य बोलो। मैम अगर मैम कंट्री की मैम हालत ठीक नहीं होती, मैम इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होती मैम, तभी मैम लेते होंगे मैम रिजर्व रिसोर्सेज, वरना तो नहीं दोबारा बोलो सानिध्य, क्या कह रहे हो? जब मैम अगर इकोनॉमिक कंडीशन जो है मैम वो ठीक नहीं है हाँ मैम, हाँ ये वाले जो रिसोर्सेज हैं मैम वो तो तभी लेते होंगे। हाँ, ऐसा होता है ना, ये जैसे हमारा जो कंटीजेंसी यूज होता है ना, इमरजेंसी यूजेस जो हो जाते हैं, भाई हमें पता है कि ये हमारे पास रिजर्व रखा है, कभी भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? तो रिजर्व्स आर बेसिकली एक एश्योरिटी होती है कि हमारे पास रिसोर्स रखा है और उसको जब भी व्हेनेवर वील बी नीडिंग देम हम उनको यूज कर सकते हैं विदाउट एनी इफ एंड बट, बिकॉज वी नो हाउ टू मैम यूज देम एंड वी नो द यूजेजेस ऑल्सो। हाँ बोलो सानिध्य। मैम इसमें लेकिन मैम लिखा है रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। हाँ मैम लेकिन वो तो मैम अभी भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, तो वो यही कह रहा है ना कि हम इसको लिमिटेड उसमें यूज कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लिमिटेड उसमें यूज कर रहे हैं। भाई डैम्स वगैरह अगर आप देखो, बोलो बोलो बेटा। बाकी जो है वो हमने बचा के रखा रिजर्व रिसोर्सेज में। नहीं, हमें पता है कि रिजर्व है हमारे भाई घर में जैसे हम जब बजट बनाते हैं घर का मनी स्पेंड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, कुछ पैसा रिजर्व में रख देते हैं। हमें पता है कि हमने जो बजट बनाया उसमें हमारा काम चल जाएगा, बट कभी कभी जब इमरजेंसी आती है या कभी कुछ इस तरीके के जो है मिसलेनियस जो है एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो उसके लिए हम उस पैसे को इस्तेमाल कर लेते हैं जो हम अपने रिजर्व में रखते हैं। हमें पता है, हमारे दिमाग में है कि हमारे पास रिजर्व रखा है, मतलब हमें ढूंढना नहीं है उस रिसोर्स को, ठीक है? हमें पता है हमारे यहाँ पे हमारे रिजर्व उसमें रखा हुआ है रिजर्व में, और हम उसको एनी टाइम व्हेनेवर वी फील लाइक वी कैन यूज इट, ठीक है? तो उसकी यूटिलिटी हमें पता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसको यूज करने के लिए, पर क्योंकि अभी इस समय हमें रिक्वायर्ड नहीं है वो, that is why we are not using it, we have put them in as reserves, right? got और it? Yes. स्टॉक था मैम उसमें हम पे इतनी टेक्नोलॉजी थी। स्टॉक में है कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज है जिनमें पोटेंशियल है टू सर्व एज रिसोर्स, बट हमें उसका जो है टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो क्या यूज होगी वो हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको एज अ स्टॉक मानते हैं, है ना? जैसे क्या बोलते हैं, मेघालय एक स्टेट है, आप सबको पता है, इन नॉर्थ ईस्ट, राइट? Yes, ma'am. है ना? तो मेघालय में देर आर सर्टेन माउंटेन्स जो कि पूरा का पूरा एक कोल का रिजर्व है वो, पर वहां के जो लोकलाइट्स हैं, क्योंकि उस कोल की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उस कोल को जो है फ्यूल की तरह वो लोग यूज करते हैं अपने घरों में। एंड वहां पे कोल ऐसे यूज होता है जैसे नॉर्मल होता है ना, हम अपने गए सामान निकाल के ले आए, घर में चीनी रखी है, चावल रखा है, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दे यूज इट लाइक दैट। गवर्नमेंट हैज नो आइडिया कि इस तरीके का कुछ वहां पे है, तो जब गवर्नमेंट ने डिस्कवर करा तो इट वाज लाइक अ स्टॉक फॉर देम बिकॉज गवर्नमेंट वाज नॉट अवेयर, ठीक है? बट अब जैसे जैसे कोल डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं, है ना, तो वैसे वैसे गवर्नमेंट इज अब भाई सर्वेज करवा रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं कि भाई कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो वहां पे जब पता चला कि भाई इस तरीके के जो है कोल डिपॉजिट्स हैं, बट देन उसकी ग्रेड जो है उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी लोअर साइड में है, तो उन्होंने कहा कि वॉट एवर इट इज वी कैन यूटिलाइज इट, तो फिर वहां पे अब जो है उसको बैन कर दिया गया, लोकल लाइट्स कैन नॉट कलेक्ट कोल फ्रॉम देयर, बट पहले जब तक गवर्नमेंट को नहीं पता था, उनके उसमें नॉलेज में नहीं था, तो इट वाज लाइक अ स्टॉक, ठीक? गॉट इट? चलिए, यस मैम। up till here everything is clear and understood, यस मैम। Yes, ma'am. and please keep preparing notes also. You can write about all these in the notebook in the form of notes like Sanidhya has done, no, for history, same way for geography also you can prepare. Reason being, if you will side by side you will be doing this, you will be taking, like you will be able to figure out what you have understood, what you have not understood later on, right? मैम फेयर कॉपी पे करने क्या?
हाँ बेटा, फेयर कॉपी में कर लीजिए. Okay, ma'am. ओके फाइन. नाउ कमिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. अब ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है, ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो दिस. पर जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने उनको इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है, इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है जस्ट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, कि आज की डेट में अगर आप देखो, देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज विच आर गेटिंग डिप्लीटेड डे बाय डे. तो वी नीड टू. बेटा एक मिनट, कोई वेटिंग रूम में है क्या? कैन यू सी एनीबडी इन द वेटिंग रूम? Nobody is there. Himanshu is telling, ma'am, please take me. अच्छा, ओके. बेटा जस्ट अ सेकेंड. हाँ, ओके. Good morning, ma'am. Good morning. So sorry beta to see keep you waiting. Chalo. Don't I worry. hope everyone is in. I hope everyone is in. Yes, ma'am. Fine, fine. चलिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. अब आप देखो, हमारे ये जो रिसोर्सेज है, इनका जो एक्यूमुलेशन है, नॉट एवरीवन हैज एक्सेस टू रिसोर्सेज. ठीक है, तो ये भी एक कंसर्न है इन फ्रंट ऑफ द पीपल कि भाई ये जो रिसोर्सेज है, इनको किस तरीके से जो है सिस्टमैटिकली यूज करा जाए, और कैसे जो इनका कंसंट्रेशन है विच इज इन फ्यू हैंड्स, उनको जो है खत्म करा जाए. ठीक है. दूसरी चीज, भाई हम जिस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, वी आर डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एज वेल. ठीक है, तो ये इन सब चीजों को देखते हुए आप ये देखो, रिसोर्सेज तो बहुत टाइम से वी आर यूजिंग. नो, टेक्नोलॉजी जब आई, जब डेवलपमेंट हुआ, जब साइंसेज ने जो है डेवलपमेंट करा, जब न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, वो तब से वी आर एक्सप्लॉइटिंग द नेचर. ठीक है, अब आज लेवल ये है कि इतना ज्यादा हमने नेचर को एक्सप्लॉइट कर दिया है कि सारा सिस्टम खराब हो गया है ना. तो ये जो कंसर्न था इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, ये कंसर्न बहुत मेजर, एक मेजर प्लेटफॉर्म पे इसको जो है इस कंसर्न को शो करा गया. और 1992 में एक जो है कन्वेक्शन रखा गया, एक तरीके का एक समिट जो है उसको ऑर्गेनाइज कराया गया, और उस समिट में जो है ग्लोबल वार्मिंग और इन सारे इश्यूज को जो है डिस्कस करा गया. ठीक है, और ये कहा गया कि भाई हमें जो है फ्रॉम द लोएस्ट लेवल, जो अपने लोकल लेवल से शुरू करके जो है हम उसको कंट्री, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज, और जो है आपका इंटरनेशनल लेवल तक जो है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स. तो ये चीज आपके बुक में है, एजेंडा 21 के नाम से. इट इज एन इम्पॉर्टेंट दिस थिंग बिकॉज इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वेयर यू नो द वर्ल्ड स्टूड all together to fight this that over exploitation of the nature. Right? Yes. Right? Fine. So Yes, ma'am. let us have Arihant reading. Arihant. See, we are reading development of resources. Arihant, are you there, beta? Arihant, can you hear me? Okay, Fatima. Read Fatima, beta. Okay, ma'am. Resources are vital for human survival as well as maintaining the quality of life. It was believed that resources are free gift of nature. As a result, human beings use them indiscriminately. Ma'am, screen show नहीं हो रही है. देखो, अब शो हो रही होगी, देखो, indiscriminately. Yes, ma'am. Okay, ma'am. And this has led to the following major problems.
Depletion of resources for satisfying the greed of a few individuals. Accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is, and halves and have nots, or rich and Haves, poor. haves and have nots, मतलब जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, और रिच एंड पुअर. ये क्लास 8th में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से रिसोर्सेस का जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हैज लेड टू दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, where some people have everything and where some have nothing with them, or they are segregated into rich and poor. You must have observed, you must have seen around you, right? Right, Yes, beta? ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. चलिए, carry on beta, Fatima. Ma'am, have to read activity also. नहीं, ये बाद में पढ़ेंगे. Indiscriminate exploitation of resources. Carry Okay, on. ma'am. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation. An equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace. If the present trend of resources depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. Therefore, resources planning is essential for sustainable Sustainable existence. sustainable existence of all the form of lives. Sustainable existence is a component of sustainable development. वो कह रहा है कि if the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. वो already हम देख चुके हैं जिस तरीके का season changes हो रहे हैं, जिस तरीके से global warming जो है हम लोग experience कर रहे हैं, ये सारी चीजें सिर्फ इसी वजह से है that we have over exploited the nature and we have over exploited the resources. ठीक है, right? Yes, ma'am. ठीक है. Now, what is sustainable development? Anybody in the class? Sanitya? Ma'am, our development without damaging our environment. What is it? Ma'am, our development, ma'am, without damaging our environment. Development without damaging the environment. ठीक है, sustainable development में we will use resources, we are using resources, but then we need to ensure that by using these resources we are not harming the environment, and it is available for all, right? Yes, Right, ma'am. yes? Okay. Now Yes. let us read about this Rio de Janeiro summit. Do you know where is Brazil? Which continent? Ma'am, Ma'am, Africa. Brazil. ma'am, South America. Brazil is in South America, right? Now this Rio de Janeiro Earth Summit 1992, it was held in Brazil, which is in South America, right? Ma'am, Olympics also held in Rio de Janeiro. Yes. Fine. Chalo, can we have Pradyum, Sanidhya reading this one? Yes, ma'am. In June 1992, more than 100 heads of state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration of Global Climatic Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. Okay. See, this Rio de Janeiro summit, Earth Summit is important. They generally ask you about that, in which year this Earth Summit was asked and what was the agenda for this summit. Plus, they will also ask you what is Agenda 21, right? If you have the books Yes, with you, ma'am. you can write it down. And sometimes they ask you, what is this UNCED?
Now, major objective of Agenda 21 was that every local government should draw its own local Agenda 21. This aims at achieving global sustainable development. मैम UNCED कोई मीटिंग थी मैम या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन? क्या चीज बेटा? मैम UNCED. हाँ, ये भाई ये यूएन का ही पार्ट था, जो कि कॉन्फ्रेंस इन लोगों ने जो है करी थी ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. भाई एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें डेवलपमेंट को इनहेंस करना है ना. ये नहीं कि कुछ भी कहीं से भी उठा के कर रहे हैं, हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है, राइट? तो मैम ये यूएन के अंडर हुआ था मैम? हाँ जी बेटा, यूनाइटेड नेशंस के अंदर हुआ था. ठीक है मैम, कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ endorsed? Okay, anybody in the class, what is the meaning of endorse? Engaged. हाँ, to, वो तो engross करना होता है बेटा. Engrossing is to engage. Endorse क्या होता है? Anybody? Kavya? Ma'am, can you tell the spelling? ENDROSE. It is written in the book only, no? Ma'am, to give support to a particular ma'am statement. Huh? To give support to a particular ma'am statement or ma'am someone's word. हाँ, अप्रूव. जैसे आपने देखा हो ना, ये टीवी में एड्स आती हैं म्यूचुअल फंड्स और इन सब के ऊपर. Yes मैम. तो उसमें यूज होता है ये वर्ड कई बार, है ना? ठीक है. Yes मैम. हाँ, तो यहाँ पे इसका मायने है, यहाँ पे इसके मायने हैं टू हैव अ पब्लिक अप्रूवल सपोर्ट, राइट? राइट. Okay मैम. Okay मैम. फाइन. सानिध्या, कैरी ऑन बेटा. Yes ma'am. Agenda 21. It is the declaration signed by the world leaders in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), which took place at Rio de Janeiro, Brazil. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on common interests, mutual funds, mutual needs, and shared responsibilities. One major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local Agenda 21. बेटा, कॉम्बैट का मतलब होता है टू फाइट. ठीक है. इसमें कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो, इसमें आपको याद ही करना होगा. ठीक है. Yes, right? ma'am. Yes, Fatima has to say something. Yes, ma'am. Ma'am, Ilma is in waiting room. Who is in waiting room? Ilma. एक तो लोग इतना लेट आते हैं, पता नहीं क्यों इतनी लेट आते हैं. देखो, what is the point of coming to class? She is in waiting. Even Purvi is there in waiting room. ले लिया हमने तो उनको अंदर अभी. But इतना लेट आने का क्या औचित्य है? Just to mark कि हाँ हमने अटेंड करा क्लास. चलिए, इसमें she is in 48. 8:48. She joined the class. Yes, ma'am. I took her. I have taken her. But अभी इससे पहले भी तो I had taken 7-8 students. कोई नहीं, चलो, let it be, no issues. Now coming to the very important topic, that is resource planning. See, whenever we organize a party, do we make certain arrangements for the party? Yes, ma'am. Yes. Yes, Now, ma'am. why do we do so? Why do we do so? Kavya? Yes, ma'am. Why do we plan for, like, why, how we plan the organizing of that party that we have planned? Ma'am, we get the cake, we get the balloons, we decorate everything, and But we why invite do we plan? We do certain plannings, no, before organizing. So why do we plan? Ma'am, to celebrate. To show off. सेलिब्रेट करने के लिए हमने पार्टी रखी है, बट देन उस पार्टी को सेलिब्रेट करने से पहले हम
कुछ चीजों को जो है अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्लान करते हैं. तो why this planning is required? Ma'am, for the guests. Ma'am, to make the guest happy. And more And so that comfortable. nothing goes wrong. Yes, nothing goes wrong, and whatever you have planned to make Proper that activity. happen, it goes in a proper manner, right? You don't run short of anything at that point of time, right? So that is Yes, why ma'am. planning is Yes, ma'am. required, right? That is why planning is required. Otherwise, randomly you can think of something and you can decide, you can start going for it, but then in between you realize that certain resources are less with you, so you feel very embarrassed at that moment. So not to feel embarrassed and not to have any kind of disorganization or discomfort to your people, to the guest, you plan everything just like that. How the resources are to be used, which resource to be used for which purpose, that is also planned, and that comes under the resource planning. Now see, without resource planning, it is very you can say that it is not very easy to find out that how many resources, which all resources we are using for which all industries. So resource planning is required. Why? Because in our country, if you see, our country has got uneven distribution of resources, as we discussed earlier in the class, that not every place has all the resources with it. There is a huge difference in the distribution of resources availability in our country, right? Yes, ma'am. Like some states have everything with them, some states have nothing with them. Like if you talk about the mineral resources, I told you that mineral resources are concentrated in few pockets of the country. That is the plateau region that we have, Chota Nagpur Plateau, Malwa Plateau, and the Deccan Plateau region. They have got concentration of minerals in it, right? Likewise, if you talk about the solar energy, you will find that most of the solar energy is available in the desert part of the country. Rajasthan. Rajasthan, exactly, right? Now, some places like Rajasthan, Gujarat, Tamil Nadu, wind energy is a very good this thing is a resource, free, found in nature, but it is not available in the other parts of the country. Now, when this kind of uneven distribution is there, then a planning is required to utilize the maximum from these resources, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fine. Yes, So in this resource Yes, planning, ma'am. we'll be reading that why resource planning is required, why a proper strategy is adopted to use these resources, and what is the benefit of having resource planning, right? So this paragraph particularly is very important. Sometimes they ask you, like, in a country like India, why it is important in a country like India, which has enormous diversity in the availability of resources, to go for resource planning. ठीक है, ये हम क्वेश्चन आपको बाद में लिखवा देंगे, इसी में से पूरा आंसर आपका आएगा इस पैराग्राफ में से, ठीक है, राइट? चलो, Okay, ma'am. can we have Akshat Sharma reading? Akshat, your camera is not on, beta. Akshat Sharma, are you there? देखो अक्षत है ही नहीं. अभिनव, रीड बेटा. अभिनव गंगवार. Yes, beta, Abhinav, read. Resource planning. Abhinav? अच्छा चलो ठीक है, your mic is not working, you rejoin the class afterward, no problems. कौन पढ़ेगा? अभिनाथ, read.
Okay, ma'am. Hmm. Planning is the resource planning. Planning is the widely accepted strategy for judicious use of resource. It It, has if importance. it has importance in a country like India, which has enormous diversity in availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other resources. There are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which are acquired Acute shortage of shortage, which they have have acute. acute shortage of some vital resources. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh, and Madhya Pradesh are rich in mineral and coal deposits. Arunachal Pradesh has abundance of water resource but lacks in infrastructural development. Infrastructural development. The Hmm. state of Rajasthan is very Very well Rajasthan is very well endowed. endowed with solar and wind energy, but Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. Hmm. It has very rich cultural heritage, but it is deficient in water infrastructure and some vital minerals. Hmm. This calls for imbalanced resource planning at the National, national, state, region, and local levels. regional and local levels. Yes. Carry on. Resource planning in India. Resource planning is a complex process which involves first identification and inventory of resources across the regions of the Wait, country. Abhinath, wait. Beta, anything in this resource planning not clear or understood? Ma'am, all clear. All clear, no? Fine. Now coming to the resource planning in India, it is a very important topic because you get questions that how resource planning is undertaken in India. Fine. All the 3 points which are referred over here, 1, 2, 3, these are important. You have to learn them, right? See, first of all, resource planning is a very complex process. Why it is a complex process? Because before we start planning about resources and how to use them, we need to know that how many resources we have, what quantity we have, and what quality we have, right? So to know this, surveys are done, resources are identified, regions are identified, and then accordingly they are distributed and then they are utilized, right? Right, class? Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. Can we have RN Gupta reading now? Resource planning in India. Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the RN regions आपका कैमरा क्यों ऑन नहीं है बेटा? प्लीज कैमरा ऑन करिए. Ma'am, can I open in next class? नहीं, अभी खोल लो. अगर आप बेड पे बैठे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. There are many who are sitting on the bed. कोई इशू नहीं है, बट कैमरा खोलो प्लीज, है ना? कहाँ गए? Ma'am, 1 minute. हाँ, 1 minute में तो क्लास ही ओवर हो जाएगी. चलो ख्याति, यू रीड बेटा. Resources planning is a complex process which involves number 1, identification and inventory of resources across the regions of the country. This involves surveying, mapping, and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resources, Very good. involving a planning structure in dot and appropriate technology, skill and institutional setup. skills and institutional setup for implementing resource development plan